So very good morning. Today we're going to start a very important topic, that is DNA replication, how it occurs inside the nucleus, what are the various enzymes which help or which catalyze the process of DNA replication. So DNA replication means when DNA makes its own copy. Okay, its own replica. जब DNA एक अपनी तरह का एक और DNA बनाता है, and the DNA replication is in a semi-conservative manner. That means old strand of DNA synthesizes a new strand of DNA. Okay, so that's why the replication in a semi-conservative way or manner. So as you know, it is a process by which DNA makes a copy of itself, especially during the time of cell division. This process involves multiple proteins or enzymes which are responsible for catalyzing the process of DNA replication and also RNA. Because as we have studied that RNA also does have catalytic properties. Okay. So this DNA replication occurs during the S phase, synthetic phase of cell cycle. You have studied in the class +1 about cell cycle. So in S phase, this DNA replication occurs. So this DNA replication actually involves 3 steps. There are 3 common steps through which this DNA replication takes place. So these steps are initiation, elongation and termination. Initiation means the beginning of the replication process. Then elongation means when the new strand of DNA starts synthesizing, and once the elongation completes, or you can say once a new strand is synthesized completely, then in the end termination would take place. That means the end of DNA replication, and at the end of DNA replication or in the termination step, one more thing happens, that when once the new strand is synthesized, it is rechecked by some of the enzymes, so that, or you can say to ensure that, is there any error, यानी उन एरर्स को चेक करने के लिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हुई है उसमें कोई गलती या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बेस तो नहीं उसमें ऐड हो गया है, तो उन सब एरर्स को प्रूफ रीड करने के लिए, दैट मीन प्रूफ रीडिंग उसको हम बोलते हैं, टू चेक एरर्स. तो प्रूफ रीडिंग वुड आल्सो टेक प्लेस at the end of the DNA replication in order to ensure the errors. Okay. So in the first step, that is initiation includes, यहाँ मैंने A लिखा है, यहाँ B लिखा है. Initiation, first of all, ज़्यादा मैंने चौक करूँगा, देखिए A and B. First of all, this would happen, then this B, step B would happen. This would happen like the way I have written over here. So first of all, replication fork formation. Replication fork बनेगा इस तरह से, यानी आपने यहाँ देखिए डीएनए पहले ऐसे था, कॉइल स्ट्रक्चर. इस डीएनए को पहले अनकॉइल किया गया, सीधा किया गया, और धीरे धीरे दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है रेप्लिकेशन फोक की एक जगह ले लिए, लाइक दिस वाई शेप रेप्लिकेशन फोक. तो रेप्लिकेशन फोक फॉर्मेशन, हाउ डज दिस टेक प्लेस? It begins with unzipping or uncoiling, like this. यानी जो base pairs हैं between the DNA strands, these two nitrogenous base pairs
purine and pyrimidines, as you know. Both of these purine and pyrimidines base pairs are combined with each other with the help of a bond named hydrogen bond. So, hydrogen bond is broken down in order to release or in order to separate these base pairs. So once these base pairs get separated by breaking down of hydrogen bond between them, this replication fork is formed. Here you can see the separation of base pairs is there. So unzipping and uncoiling of double-stranded DNA with the help of unzipping or uncoiling by topoisomerase, separation of base pairs or breaking down of hydrogen bond by helicase enzyme. We would study in the next lecture about enzymatic action and how that replication fork actually works. Then separation of purine and pyrimidine nitrogenous base pairs by the action of enzyme, that is helicase enzyme, which separates or which breaks down the hydrogen bonds between nitrogenous bases. Then once these base pairs get separated, formation of Y-shaped replication fork. So now we have two strands, 3' to 5', 5' to 3'. We have two strands now. ठीक है, दोनों के दोनों straight हो गए हैं and replication fork has been formed. 3' to 5', यानी this one 3' to 5' strand is known as leading strand, and this 5' to 3', this is lagging strand. Okay, so this is lagging strand and this is leading strand. The difference, only difference between, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे elaborate तरीके से अगले लेक्चर में. Lagging or the leading strand means it is a continuous strand. When DNA polymerase starts working on the synthesizing of new DNA strand, then this process would be continuous without any interruption. In case of leading strand, without any interruptions. But in case of lagging strand, there is discontinuity, and this discontinuity actually forms the gaps in the newly synthesizing DNA strand, which is known as Okazaki fragments. हम लोग क्या बोलते हैं? Okazaki fragments in the lagging strand, discontinuous strand. Why this is discontinuous, we will discuss later in the next lecture. ओके, पर आपने ये चीज याद रखनी है कि 3' to 5' is leading strand, 5' to 3' direction is lagging strand. Do remember this. Then once a replication fork is formed, the next work is the binding of primer. This primer is actually RNA primer. जैसे हम लोग किसी कमरे में, जैसे पीछे रूम है, तो हम पेंट करने से पहले इसको प्राइमर लगाते हैं, जिस वजह से जो पेंट है यहाँ से ना उखड़े. ठीक उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज अभी एक्शन में आएगा एक नया डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो बेस तैयार किया जाता है उससे पहले आके आरएनए प्राइमर लगेगा ताकि एक स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके. सो बाइंडिंग ऑफ आरएनए प्राइमर, और वंस आरएनए प्राइमर बाइंड्स, and always do remember binding of RNA primer. ये जो RNA primer जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? 5' एंड की ओर, फॉस्फेट एंड जो रहेगा 5' एंड वहां आके लगेगा ये RNA primer. And this RNA primer is generated by DNA polymerase enzyme. DNA polymerase enzyme actually generates this RNA primer, and this RNA primer binds at the 5' end of the DNA. This initiates the signaling for the beginning of replication. So once RNA primer binds to the DNA, or newly synthesized DNA strand, this actually signals to all the machinery which is involved to initiate the synthesizing new strands.
Then elongation. Elongation means now the activity of DNA polymerase has begun. तो DNA polymerase की एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो चुकी है. This enzyme is actually known for synthesizing a new DNA strand. आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि which enzyme is responsible for synthesizing a new strand, the answer is DNA polymerase. And it always works on the direction 5 prime to 3 prime. यानी यहाँ से ये जैसे मान लीजिए डीएनए है 5 to 3 प्राइम, यहाँ पे लगा है डीएनए पॉलीमरेज, तो इसकी एक्टिविटी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चलेगी एक्टिविटीज. ठीक है. एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली डिस्प्लेसेस आरएनए प्राइमर. ये डीएनए पॉलीमरेज जब भी काम करेगा यहाँ पे एक नया सिंथेसाइज करेगा डीएनए स्ट्रैंड, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो उससे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ था, आरएनए प्राइमर. तो ये डीएनए प्राइमर इस आरएनए प्राइमर को डिस्प्लेस करेगा, इसको हटा देगा और अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा. यानी प्राइमर के बाद पेंटिंग होना शुरू होगी इसके ऊपर. नाउ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स which are present in the matrix, in the nucleoplasm, these nucleotide base pairs means purine pyrimidines, they start adding. वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं जब एक नया, आपको पता है जब एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा तो इसमें ऐड होंगे ना, इसमें ऐड होंगे नहीं जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इन बेस पेयर्स के. सो और ये आपने ये भी याद रखना है कि जब भी ये बेस पेयर्स ऐड होंगे इस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड पे, ये बेस पेयर हमेशा 3 एंड हाइड्रोक्सिल एंड से ही जो है ऐड होना शुरू होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर. सो डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स मूविंग एंड सिंथेसाइजेस न्यू डीएनए स्ट्रैंड. तो एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है ऑन बोथ लीडिंग स्ट्रैंड और एंड लैगिंग स्ट्रैंड, यानी इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर एंड इन अ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर. हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से. सो आपने जो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू है अबाउट रेप्लिकेशन प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, आज आप सिर्फ यही जानेंगे. बाय टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट अ मशीनरी व्हिच इज यूज्ड. मशीनरी मींस एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड और व्हिच कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में. देन एट लास्ट टर्मिनेशन, दैट अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड गेट्स सिंथेसाइज्ड, बन चुका है. Now, once new DNA strand is synthesized, then the function of DNA polymerase again to proofread that newly synthesized DNA strand. Proofreading means to check errors, whether any wrong DNA nucleotide base pair been added or not. यानी कोई अगर गलत नाइट्रोजनस बेस पेयर उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अगर उसमें ऐड हो गया है तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है. जैसे आप फैक्ट्रीज में देखते होंगे टीवी वगैरह में, कैसे कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसमें कुछ प्रोडक्ट खराब है तो उसको वहां से मशीन अपने आप निकाल देती है. ठीक है, उसी तरह से ये काम डीएनए पॉलीमरेज करता है, दैट इज प्रूफ रीडिंग टू चेक एरर्स. ओके. देन जब ये चीज खत्म हो जाए एंड में टीलोमेरेज, डीएनए पॉलीमरेज का ही टाइप है एंजाइम का, टीलोमेरेज इज एंजाइम जो कि इस चीज को अगेन जो फोर्क ऐसे बना था और यहाँ पे ये स्ट्रैंड थे तो नए स्ट्रैंड यहाँ बन चुके हैं अब दोनों तरफ. तो जब ये नए 2 डीएनए बन चुके हैं यहाँ पे तो जो टीलोमेरेज जो एंजाइम है वो अगेन इनको इनके ओरिजिनल कॉइलिंग वाले स्ट्रक्चर में ले आता है, टीलोमेरेज एंजाइम. तो वी वुड डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग और द एंजाइम्स मशीनरी व्हिच इज used during the process of DNA replication. You have to remember only the 3 steps: initiation, elongation and termination, how this takes place, and tomorrow we would explain this DNA replication with the help of the replication DNA replication fork and the enzymes, how do they work, where they are present, everything. Thank you.